नमस्कार दर्शक बंधु ओडिया नॉलेज एकेडमी यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत। जदि आपण आम चैनल को प्रथम आछन दयाकोरी चैनल सब्सक्राइब बटन क्लिक करी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वीडियोटी भल लगे निश्चय वीडियोटी को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे भूलें जहाँद्वारा आप प्रतिदिन नुआ नुआ अपडेट पाइपर। तो आसन देखा आज खबरटी ना जो सरकारी कर्मचारी अच्छा से गोटे सुप्रीमकोर्ट गोटे गुरुत्वपूर्ण राय देती। जो गुरुत्वपूर्ण राय रे जो गठित बेंच रे जस्टिस हिमा कोहली जी अच्छा मान्यवर जस्टिस एवं जस्टिस आसाउद्दीन अमुल्ला जी अच्छा द्वारा गठित जो बेंच गोटे गुरुत्वपूर्ण राय देती जो थे कि पदोन्नति एक मौलिक अधिकार बोली मान्यवर जस्टिस सुप्रीमकोर्ट गोटे गुरुत्वपूर्ण राय देती। तो आसन देखा आज खबरटी कौन अच्छी ये लिखाई आप देखिपे फेल्योर टू कनसीडर एम्प्लॉई फॉर प्रमोशन ए भायोलेसन ऑफ फंडामेंटल राइट। ये मान्यवर जस्टिस कहते कि जिते गोटे कर्मचारी प्रमोशन को फेल्योर हम जो को आम कहीपर कि भायोलेसन ऑफ फंडामेंटल राइट जोटा मौलिक अधिकार भायोलेसन। एसी ए बेंच ऑफ जस्टिस हेमा कोहली एंड आसादुद्दीन अमुल्ला जी अच्छा द्वारा गठित बेंच गोटे कहते सेड ए राइट टू बी कंसीडर फॉर प्रमोशन हैज बीन ट्रीटेड बाय द कोर्ट नॉट जस्ट ए स्टैट्यूटरी राइट बट एज ए फंडामेंटल राइट। ये मान्यवर कोर्ट कहते कि एटा गोटे राइट टू प्रमोशन हूँ गोटे फंडामेंटल राइट बा मौलिक अधिकार। हाउएवर देयर इज नो फंडामेंटल राइट टू प्रमोशन इटसेल्फ द कोर्ट सेड। किंतु से कहते कि देयर इज नो फंडामेंटल राइट टू प्रमोशन इटसेल्फ द कोर्ट सेड। तापर कोर्ट कहते कि द सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दैट द एम्प्लॉई आर एंटाइटल्ड फॉर बीइंग कंसीडर फॉर प्रमोशन सब्जेक्ट टू देम सैटिस्फाइंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया and failure to consider an employee for upgradation to a higher post would violate their fundamental right। ये मान्यवर सुप्रीम कोर्ट कहते कि जड़े कर्मचारी जिते प्रमोशन सब्जेक्ट कथा आसे सबू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया साटिस्फाई करिया पड़े एवं समस्त एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया साटिस्फाई कलापर भी जदि प्रमोशन होनी प्रमोशन फेल्युअर होची ताहले आम कहीपर कंसीडर एन एम्प्लॉई फॉर अपग्रेडेशन टू ए हायर पोस्ट वुड भायोलेट देयर फंडामेंटल राइट बोली ये मान्यवर सुप्रीम कोर्ट कहते। ए बेंच ऑफ जस्टिस हेमा कोहली एंड आसादुद्दीन अमुल्ला जी अच्छा सेड ए राइट टू बी कंसीडर फॉर प्रमोशन हैज बीन ट्रीटेड बाय कोर्ट नॉट जस्ट ए स्टैट्यूटरी राइट बट एज ए फंडामेंटल राइट। हाउएवर देयर इज नो फंडामेंटल राइट टू प्रमोशन इटसेल्फ द कोर्ट सेड। The court set aside that Patna High Court's order which directed the Bihar Electricity Board to consider the case of promotion of धर्मदेव दास जी अच्छा जड़े कर्मचारी थे जे कि बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड रो जड़े कर्मचारी धर्मदेव दास अंडर सेक्रेटरी टू द पोस्ट ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी फ्रॉम जुलाई 29, 1997 इंस्टेड ऑफ मार्च 5, 2003 सिंस ही हैज कंप्लीटेड ए सर्टन टाइम पीरियड एज पर द रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन अनुसार से प्रमोशन पाइबा कथा। The bench emphasized even if there was a vacancy to the subject post, it would not have automatically created a valuable right in favor of the respondent for claiming retrospective promotion to the next higher post। It is only when an actual vacancy arose that the respondent was granted the benefit of accelerated promotion and that too on going through the prescribed process, the court said। ताले ये कोर्ट कहते जो गोटे एक्चुअल वैकेंसी रो प्रमोशनल पोस्ट को सेतोले ही से कर्मचारी को बेनिफिट दिज्व प्रमोशन पाई जोटा कि गोटे ड्यू प्रोसेस रे पूरण कर। ये मान्यवर कोर्ट कहते इट इज अपील द बोर्ड क्वेश्चन द वैलिडिटी ऑफ हाई कोर्ट्स ऑर्डर कंटेंटिंग दैट आफ्टर द बिफ्रिकेशन ऑफ ईस्ट वाइल बिहार द पोस्ट ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 6 to 3। द टाइम पीरियड criterion was only a directory in nature or cannot be treated as statutory for the respondent to have claimed an entitlement for promotion itself। The court, while agreeing to the contention, said by no stretch of imagination can a right for being appointed to a higher post be treated as a vested right। ताले गोटे इमेजिनेशन रे आम कोर्ट कहते कि गोटे इमेजिनेशन रे आम अलग ऊपर पोस्ट को जीवाई गोटे राइट बा अधिकार बोली कहीपर नहीं। नो एम्प्लॉई कैन ले ए क्लेम फॉर बीइंग प्रमोटेड टू नेक्स्ट हायर पोस्ट मेयरली ऑन कंप्लीटिंग द मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस। ताले ये कहते जिते कर्मचारी जनक मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस ही कंप्लीट कलापर
से जाइकी क्लेम करें तांकर प्रमोशन पाई सच एज इंटरप्रिटेशन ऑफ द रेजोल्यूशन would be fallacious and virtually result in nullifying the settled law of right inhering in an employee for being considered for promotion being a fundamental right, the bench said. ताल बेंच कही जो एम्प्लॉई प्रमोशन गोटे हूँ फंडामेंटाल राइट बा मौलिक अधिकार किंतु सर्टन रूल एंड रेगुलेशन द कोर्ट एम्फासाइज द स्पिरिट बिहाइंड एलिवेटिंग द राइट बीइंग कंसीडर फॉर प्रमोशन टू फंडामेंटाल राइट इज इननेस इन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ताल जो प्रिंसिपल संविधान में जो प्रिंसिपल अच्छी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी सेटा को आम कोर्ट कहते गोटे फंडामेंटाल राइट बा मौलिक अधिकार इन रिलेशन टू मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉइंटमेंट टू ए पोजिशन अंडर द स्टेट ताले राज्य सरकार कि सरकार को अधीन जो आम देश अधीन कार्य करुचे सरकार को अधीन कार्य करुचे तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जोटा फंडामेंटाल राइट अच्छी सेटा आम फंडामेंटाल राइट कहीपर प्रमोशन तारी अंडर आसुची द कोर्ट एम्फासाइज द स्पिरिट बिहाइंड द एलिवेटिंग द राइट बीइंग कंसीडर फॉर प्रमोशन टू ए फंडामेंटाल राइट is inherent in the principle of equality opportunity in relation to matter of employment appointment to a position under the state. A right to consider for promotion being a fact of right to equal opportunity in employment and appointment. ताले ये कोर्ट कही जो प्रमोशन को नहीं जो कोर्ट कहते कि एटा राइट टू इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट एंड प्रमोशन वुड हैव टू ट्रीटेड एज फंडामेंटल right guaranteed under the article 14 and 16(1) of the constitution, but such a right cannot be translated into a vested right of the employee for being necessarily promoted to the promotional post unless the rules expressly provide for such a situation, the bench said. ताले मान्यवर कोर्ट कही कि जो राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी आउ जोटा आमर कौचे जोटा आर्टिकल फंडामेंट आमर कन्स्टिट्यूशन अच्छी आर्टिकल 14 आउ आर्टिकल 16 ए जोटा अच्छी सेटा आमर आसो कौन ना प्रमोशन ने आसो किंतु जिते सेटा आम भेस्टेड राइट कहीपर जड़े कर्मचारी भेस्टेड राइट नुह किंतु केतले हम ना अनलेस द रूल एक्सप्रेसली प्रोवाइड फॉर ए सच सिचुएशन जिते जो नियमटा अच्छी सरकार से नियम आधार में जे पर्यंत एटा न आसी आम फंडामेंटाल राइट कहीपर तो प्रमोशन इफेक्टिव फ्रॉम डेट ऑफ ग्रांट नॉट व्हेन वैकेंसी क्रिएटेड सुप्रीम कोर्ट ताले मानव सुप्रीम कोर्ट कही प्रमोशन इफेक्टिव फ्रॉम डेट ऑफ ग्रांट ग्रांट समय प्रमोशन नॉट व्हेन वैकेंसी इज क्रिएटेड ये मानव सुप्रीम कोर्ट तांको जजमेंट कही तो निहाती एटा कर्मचारी गोटे खुशी खबर कहीपर तो आज ये खबरटी जदि आपको खबरटी भल लगे दयाकोरी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे वीडियो को लाइक करेंगे कमेंट करा भूलें पाखे बेल आइकन प्रेस करी ऑल नोटिफिकेशन क्लिक करेंगे जहाँद्वारा आप प्रतिदिन नुआ नुआ अपडेट पाइपर। धन्यवाद।